whatever we are discussing today in this particular session, you will be able to understand how marketing is relevant to all of us and how it has been relevant to all our lives. So without much ado, I just want to start this particular session by just sharing with you the syllabus once again for the unit 1 through the presentation, and then accordingly we will be discussing about the concepts one by one. As of now, my habit is to conduct a session with the camera on. So could you please put on your camera if possible, if you're not in a workplace, so that I can see your faces and I can interact with you and can understand your facial expressions. Yes, very good. Shubham, hello. Shubham, I can see you. Yes, sir. Hello, Priyanka. Akshay, your screen has been reversed. Hello. That's great now. Hello, sir. Actually, I'm in Hello. office. Okay. Okay. Those who are attending the session from the office are requested to turn off the camera as and when if it is difficult for them, and rest are requested to kindly put on the camera so that we can have interaction and I can see your facial expressions as well. Harish, Soji, Suraj, everyone, you all are welcome to my class. I am Professor Amar Gupta and I am going to be your friend. I'm going to be your mentor as well as a guide for you, and I am sure the association is going to be very long lasting and very fruitful with you all. Just a minute. Harish, there is some humming which has been coming from your end. Okay. So, as of now, when we talk about marketing, basically, Monica, hello. So, when we talk about marketing, what is marketing? Marketing is something which starts from assessment of the needs and wants of the customers. Now, let's take an example of your day-to-day life. Whatever product you are using, I'll take an example of Gillette. Gillette, you all know, Gillette is a very famous brand that's into men's grooming products. Now, the Gillette razor, which comes in the market, there is a story behind that. The company had conducted a very fantastic market research for the Gillette brand in Harvard, and they were conducting this particular research on the Indian origin students to understand their consumer behavior. Why they wanted to assess the consumer behavior? The purpose of assessing the consumer behavior was to identify whether this same particular model can be implemented in India when they would introduce their particular brand in India. So what happened? They had studied very few group of Indians in that particular college, and based on that, the reports were made, and then they had launched this particular Gillette razor in Indian market. But then subsequently, what happened? The Gillette razor brand at that time it got failed miserably because the razor was having blades which were having very less amount of distance between the two blades. And in Indian consumers case, as you know that in case of Indian people, the Indian origin people, their beard is very thick, the hairs are thick. So जब वो दाढ़ी बनाते थे इंडियंस, तो उनके बाल उस पर फंस जाते थे। उसकी वजह से जिलेट का ब्रांड लॉन्च होने के बाद इंडिया में बिल्कुल फेल हो गया। अब इनको ये फील हुआ कि शायद उन्होंने कहीं पे गलती कर दी। दे जस्ट रियलाइज दैट दे हैव कमिटेड अ वेरी बिग मिस्टेक। व्हाट दे डिड वाज, कस्टमर कहीं पे आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो और आपने एनालिसिस कहीं और पे किया। ये बात अलग थी कि आपने इंडियन ओरिजिन जो थे स्टूडेंट्स उनके ऊपर आपने रिसर्च की, बट देन द रिजल्ट्स वर नॉट प्रूव टू बी करेक्ट। So what they did was again they conducted the research on Indian consumers, those consumers who were in India, and on that selected consumers they identified that this was the biggest issue, that the beard was thick as compared to the European people. Normally उनकी जो beard होती है वो काफी महीन होती है, उनके उनकी जो beard होती है वो, और जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनकी बियर्ड में काफी जमीन आसमान का डिफरेंस था। देन व्हाट दे डिड वाज दे हैड लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड कॉल्ड एज जिलेट फ्यूजन इन इंडिया। जिलेट फ्यूजन की लॉन्च इसी वजह से हुई क्योंकि उनको ये पता चला कि कंज्यूमर को क्या चाहिए था। तो यहां उन्होंने किस पे फोकस किया? दे हैड फोकस्ड ऑन द कंज्यूमर्स नीड वांट्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। दिस वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर कंज्यूमर की नीड वांट्स और प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने फोकस नहीं किया, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे मार्केट में वो चलेगा नहीं।
There are n number of examples, Devendra, Harish, wherein you feel that the product is not meeting your expectations, then next time you don't buy the product. Because if the product is not able to satisfy your requirements, there is no need to buy the product again and again, right? Now, another example I can take, salt. Everyone is using salt. Saurabh is using, Monica is using, and Shubham, and everyone, those who are attending. Now, in salt, there are people, those who are suffering from lifestyle related diseases, like someone is having blood pressure, someone is having cardiovascular diseases, someone is having diabetes. So, the doctors are advising to reduce the intake of salt and sugar in these cases. Why? Because the salt is having sodium, and excess of sodium will actually just decline your health, because the sodium elevates and aggravates the blood pressure. Increase in the blood pressure may result in just increase in the other things, and then your organs may get damaged. So these all things are quite possible. So what companies did was, they had come up with a particular brand wherein the sodium intake has been reduced, and now you can see that Tata and many other brands, they are coming up with less sodium content, this particular salt. So the product was identified based on the problems and the needs of the customers. Salt is a daily need. Devendra, you can also understand that salt is a daily need. Do you agree, Devendra? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Salt is So daily need. salt is a basic need. Now, if you don't take the salt in right proportion, what will happen is it will affect your health. So there are other things also, like for example, sodium. Then you have iodine also. Salt is the source from where you can derive the iodine. Although iodine is also available in fruits and vegetables. So what companies have done was, they have fortified this particular normal salt or the common salt with the iodine, so that anyone who is consuming the salt in any particular dishes or any other food items can get that particular iodine with whatever prescribed limit, so that there won't be any problem like thyroid and other things, right? So the basic needs are identified. So marketing is not just a process which starts with the selling of a product. Remember, friends, marketing always starts with the identification of needs, wants, and demands of the customers. First, the needs of the customers are being identified. If there are any wants pertaining to that, that has been identified, and based on that, the product has been launched. Take an example of automobile vehicle. Now, in case of automobile vehicle, what happens is, automobile vehicle, you can see the hatchback segment. Now, in hatchback segment, the cars are starting from 2 lakh onwards, and it is up to 8 9 lakhs. Then comes the SUV segments. SUV means sports utility vehicle and multi utility vehicle, MUV. Now, there are n number of brands, n number of variants of various automobile manufacturers which are in this particular range. Now, talking about other segments, now you have premium and luxury segments. Now, in premium and luxury, it is a combination of SUV plus the additional features which can be considered as sedan class. Now you have Mercedes, you have Audi, you have Bugatti, you have Lamborghini. There are n number of brands which are focusing in only luxury segments. They are not focusing on hatchback segment, because they know that their customers are basically from that particular segment. Now, if you have identified the customer, what basically it means is, you have identified the needs and wants of your class of customers. You cannot fulfill the requirement of every single customers, right? For example, Red Bull cannot make a drink for everyone, right, from kid to the old age people. Red Bull had identified that they are producing a drink which is meant only for the youth, not for too adult and not for too youngs. Okay, same is with the case of cosmetic brands. Cosmetic brands are basically related to a particular age group of the girls, the teenage girls, then the college going girls, and for further the married housewives. These kind of brands have already made their segments because they have identified the needs and wants of the customers. So they are not focusing on the selling part. They are just focusing on identification of needs and wants, and then delivering a value to the customers in the form of a product. So value means, suppose if I say that, Priyanka, if you attend my lecture, I would give you this sanitizer. This is a sanitizer bottle in my hand. So you would say, sir,
this sanitizer bottle is of no use to me because I am already having enough of sanitizer with me. What does it mean? It means that I have not clearly identified your requirements. I have not clearly identified your wants. And based on that, if I offer you anything, it will not contribute any value to you. Same is with you also. You all are attending my session of basics of marketing. If I start teaching you geography, will it add any value to you? Probably from knowledge point of view, it may add certain value. But from the course curriculum point of view, Akshay, you would be agree with me that it won't contribute any value to the students' overall career perspective because you won't be having an exam related to geography, right? So, Monica, Harish, and Devendra, until now, do you agree with me that the marketing is basically focused on the needs and wants of the customers and then delivering or offering a value to the customer by way of a product or a service? So, this is a very Yes, beautiful definition of marketing. Yes, over to you, please. Do you agree, Harish? Harish bhai. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Uh, okay. Monica, do you agree that marketing? Yes, sir. Okay. Akshay ji, do you agree? Yes, sir. Yes. Okay. I agree. Okay. So marketing is a very simple process, but identification of needs and want is very difficult process because every person, be it you, me, or any other person like Chaitali, are having different set of needs and wants because you people are having different kind of origin, different ethnic backgrounds, different language backgrounds. Maybe you are speaking Marathi, but then still there is some difference in terms of culture. So because of this cultural differences, Devendra, I am unable to hear you. You wanted to say something, Devendra? Devendra, no, you sir. want to? Okay. I was looking at your lips, so you were saying something. So I just thought that you want to talk to me Sir, only. I just remember. Okay, okay, fine. So I was giving you the example of automobile vehicle. Now, in case of automobile vehicle, if you have a budget of 4 lakh rupees and you want to satisfy your need, basic need of transportation, so in 4 lakh budget, whatever cars will be offered, that will satisfy your need, and to a certain extent, it will satisfy your want also. Because in the car segment, you may demand for some sound system, you may demand for some accessories, you may demand for some additional features. So whenever you are going ahead beyond the basic needs and you demand for something else or something extra beyond your basic desires, then it means that you are talking about your wants. And companies are basically fulfilling your wants, not just the basic needs. So by merging your needs with the wants, the companies are able to create a demand for the product. Because if I know that if this sanitizer comes with a particular chemical which is not going to harm your hand, which is not going to harm your skin, and if I able to communicate the same information to you all, I think the girls will be very much impressed because they have more sensitive skins. So they will feel that if this sanitizer is not going to harm their skin, they will definitely take this product for me and this product will add value to their life. Otherwise, it will have no value. Let's take an example of Procter and Gamble, Hindustan Unilever, and all other brands. Procter and Gamble, for example, they have various cosmetic brands. Hindustan Unilever, you have Ponds, you have Lakme, so all these brands are there. Now, what they are doing is they are not selling you the products, they are trying to sell you the hope. Remember, in marketing, we are trying to sell the hopes because when you see the advertisement of a detergent powder, what you see is the person is using the detergent powder and the cloth gets clean so much that it looks astonishing white, right? So what it basically depicts is it basically tells you that if you use the same product, probably the results will be the same. So it is actually trying to give you the hope for the problem which you are facing. The problem is the dirty clothes. So every brand today is looking after the problems and the needs. When you go to the industry and the corporate sector and want to apply for a job, what you basically do is you will tell them that you have this particular requirement of an accountant or a finance person, or you have a requirement of marketing executive. I am the right person who can contribute by way of adding value to the organization by increasing the business of the organization by contributing more in terms of adding more customer base, or by helping the company to reduce the cost, by helping the company to maximize the efficiency and optimize the production. All these things are basically the marketing things. You are going to do the marketing for yourself. So marketing is everywhere.
you are talking about the problems of the company, and based on the problem you are offering yourself as a substitute or as a product which can solve the problem of the companies. So marketing is a really fantastic field. It is considered everywhere, and in a day you are being surrounded by almost 3500 plus brands. Now you start counting the day, right from the time when you get up in the morning. You see the bed is a brand. Then in the bed there must be cushion. That cushion itself is a brand. The cushion color would be an ink, which would be a separate brand. The Sunmica will be a brand. The nails which are being fitted into that particular furniture, it is a brand. The other things like the bed sheet, the thread of the bed sheet, it is a brand. Now when you get up, you go to the washroom, you have a toothbrush, it's a brand. In the toothbrush, the plastic fiber brush, that itself is a brand. Then the particular ink from which the brush is being colored, itself is a brand. The mirror itself is a brand. Everything, the glasses which you are wearing right now, the specs which you are wearing, headphone which you are having, the mobile phone which you are having, inside the mobile phone there is a combination of various small capacitors. Then you have small things and ICs and chips. So these itself is a brand, right? So in a day you are being surrounded by 3500 brands. All these brands are coming together to solve one important thing, that is your need and want. They are trying to offer you a product which will add value to your life. Now suppose if Harish doesn't smoke, and if Harish has been offered a particular tobacco substance from his friend, Harish won't consider it as a part of life, and Harish won't be getting any value out of it. So Harish will simply throw it away. So the companies are not looking for a product which the consumers will simply throw away and will not contribute any value to their particular life. Now today, if you see even atta, they are showing that particular atta roti in such a way that your taste buds get that particular feeling that wow, what a delicious roti that particular lady is making on the screen. If you see the advertisement of a pizza, so your taste buds get that particular feeling, your tingling feeling, and then you start imagining yourself consuming or eating that particular pizza. So marketing is all about creating an impression which would be a long lasting impression that will create a positioning of a brand. Now let's take an example of tea brands. Various tea brands come up with a particular thing wherein you can see that the person who is taking a sip of the tea on the screen is just showing the sense of satisfaction by closing the eyes, and by just showing that, by reflecting that, he is getting immense amount of satisfaction by taking just a single sip of the tea. What does it mean? They are trying to just correlate with your senses so that you can also imagine that yes, this is the particular brand and this is going to be very effective and it is going to be very helpful for me to get that early morning sickness or that particular tiredness, right? So this is just an example. Now talking about marketing, there are certain things which you should know today. So I shall be sharing with the presentation right now, and with this presentation I hope that you will understand the basics of marketing. Is the screen visible to you all, please? No, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, No, okay, sir. okay. Thank you. Yes, sir. No, I think there must be a problem with the network connection at your end because maximum students are telling that the screen is visible. Is it visible now? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so Yes, sir. that okay, fine. So as I was talking about basics of marketing, it is 105. Course code is 105. It is a full credit generic course wherein you will have 3 credits, and 3 credits means it's a full credit course wherein 50 marks assessment will be done by university and the 50 marks assessment will be done by us. As a faculty, I shall be giving you the assignments, the case study, the presentation, group discussion, all such things will be there as a part of internal assessment to understand your progress in this particular subject. So this particular course is going to cover the first course objective, that is the remembering part. Remembering part means defining the various concepts in terms of marketing and the various company orientation towards the marketplace. Now, this is the syllabus. As we can see from the syllabus of Unit 1, some people are joining, so I have to just add them in this particular class. Okay.
So it talks about the definitions and functions of marketing, scope of marketing, then evolution, core concepts. The core concept means the need, want, and demand, the customer value exchange process, then the customer satisfaction, customer delight, customer loyalty, concept of markets versus market competition, then key markets, the marketplaces, market spaces, meta markets, what are digital markets, brick and click model, then impact of globalization, technology and social responsibility on marketing, the new consumer capabilities, new company capabilities, functions of marketing managers. This is very interesting topic. Linkage of marketing function with other functions of the organization. Now, even if you don't want to make a career in marketing, you must understand how the marketing has been linked with the finance department, with the HR department, with the production department, and with all such departments that exist in the organization. So it is very important, and I'm going to cover it in this particular chapter. Then the company's orientation towards the marketplace, that covers about the production, product sales, and societal marketing concept. This talks about the evolution of marketing. So I shall be covering this part also. Then we have the relationship marketing. What is relationship marketing? Holistic marketing approach, selling works versus marketing, then concept of marketing myopia, and marketing process, understanding and creating and communicating and delivering value. So all these things I'm going to cover one by one, and I'm sure those who are attending my session, those who will get my video, will definitely understand this particular subject very well. If at all there is any particular confusion in your mind, I am just a single call away. Don't worry. Don't hesitate to give me a call, give me a WhatsApp message or anything, whatever you can do to connect with me. You are most welcome. I have already shared with you the link of my blog that is related to the marketing. That if you click on the link, you will understand certain part of the unit 1, which talks about the core concept and the evolution of marketing concept. So this is very important to just regularly keep on checking that particular link whichever I am sharing with you, and I shall be also sharing with you the YouTube link of my particular channel, wherein you can visit and you can see this particular video. I'm making a video on unit 1, and very soon it will go live for your consideration. Once it is ready, I'll share you the link. Let's proceed further. So as I was talking about marketing, so marketing basically starts before manufacturing and selling starts after manufacturing of a product. So what we do in marketing is we basically focus on how to satisfy the consumer needs and wants by offering a product that can add value to their life. While at the same time, selling focuses only on how to generate the sales revenue, how to increase the profitability of the company by increasing the sales of the organization. They are not considered about the needs and wants. What they do is they will try to sell you the product, whatever they are having. Now let's assume that a salesman has knocked your door and you have just opened the door and you have seen the salesman who is standing in front of you. Now, whatever product the salesman is having, the salesman is not going to ask your need and want. He will simply take your time, request for your time, and simply try to explain that why this product has been better for you, rather than understanding whether you need this product or not. For example, the day before on Saturday, I had got a surprise. There was a salesman who knocked my door. I just opened it and I found that there was a boy. He was pursuing an MBA from some institute and is working with the encyclopedia company, which is selling that encyclopedia hard copy and soft copy. So he was insisting on purchasing that entire encyclopedia series. So I just told him, dear friend, I have the access to this internet, so I don't need that. But for this particular conversation, for which lasted about 2 minutes, he was just trying to convince me that I must purchase because it's a fantastic product. But since I'm a faculty and I am also having the access to the internet resources, I found that this product is of no value to me because I already get all such kind of information directly by accessing the internet. So marketing was lacking in that particular entire attempt. What the person was doing was he was just simply putting his effort to just try to sell that product to me, irrespective of the fact that whether I need that product or not. So these things exist. Now, when you visit a hotel, what you do is you look at the menu, and based on the particular choices you place the order. So
based on your requirement, the cook will make the food, and this particular waiter will just serve you the food. So this is called as marketing, because here you have the customer grievance part also, the customer service also, and other things are also being taken into consideration, which basically remains absent totally in case of selling. Now, marketing is very valuable asset to any organization, because marketing helps the company to retain the customers. Now, you know that if today I'm taking a session of yours and if you are satisfied, tomorrow I will not be taking much efforts to draw your attention or to attract you to join my session in the class, because I know that since I have a very positive feedback, tomorrow also if you are available, you will definitely join and you will attend my session. But so today if I create a wrong impression, tomorrow you will not attend my session, by because the first impression will tell you that there is no need to attend this session, because whatever things I have covered, that you already know in life, right? So about marketing, the definitions have been given. We consider the definition of American Marketing Association and Philip Kotler and Chartered Institute of Management over here for this discussion purpose. Now there are n number of authors which are being recommended by Pune University. That day in my orientation session, I just gave you the glimpse. Further, you can visit the syllabus and you can buy or you can borrow the textbook or the reference book from the library. You can borrow, otherwise you can buy one copy for yourself based on your choice. So I will suggest you at least once you can visit the campus, you can compare the authors, and based on your choice, your liking and your understanding about the language, you can take one subject book at least for yourself. Now, American Marketing Association has defined the marketing as the activity, the set of institutions and the processes for creating, communicating and exchanging offerings that have value for the customers, clients, partners and societies at large. Simply, अगर मैं आपको वैल्यू की बात करूं, तो वैल्यू देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठंडियों के टाइम में आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं और आप घर से सुबह सुबह निकलते हैं, आपको बाहर की चाय पीना पसंद नहीं है। आपने घर में अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बोला कि मैं सुबह ही चाय बना के लेके जाता हूँ, जिससे कि मुझे अगर कहीं पूरे दिन चाय पीने की जरूरत पड़े तो मेरे पास में वो चाय गरम गरम रहेगी, जिसको मैं खुद निकाल के कभी भी पी सकता हूँ। तो इस केस में अगर आप नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल में अगर चाय लेके जाएंगे तो वो 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम है, टू कीप द प्रोडक्ट वार्म। एंड अब आपको टी को अगर वार्म रखना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा एक थर्मोफ्लास्क चाहिए। वो थर्मोफ्लास्क जो आपकी टी को एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तक गर्म रख सके, जिससे कि आप अगर कभी भी कहीं पर भी हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, आप सीधे उसको निकाल के कहीं पर भी पी सकते हैं और उसको चाय का सिप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट में आपकी नीड और वांट्स और आपकी प्रॉब्लम्स छुपी हुई थी, उसको उन्होंने इस प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व किया और इसने ये प्रोडक्ट को आपको ऑफर करते वक्त इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया आपके लिए। तो वैल्यू एडिशन किस लिए हुआ कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल में चाय लेके जाते तो आपके लिए वो चाय की कोई वैल्यू नहीं रहती और वो चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती, तो वो चाय पीने में भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन आज आपके पास में अगर ये थर्मोफ्लास्क बॉटल है तो आप कहीं पर भी विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेक this particular tea along with you or any other hot drink along with you to just get that during that particular traveling or during your office meetings, between your office meetings, after your lunch break or anything. So marketing में सबसे important है value deliver करना। विदाउट वैल्यू डिलीवरी कोई भी एक्टिविटी मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग करने के लिए आपको केवल एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले कंज्यूमर को समझना जरूरी है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर आपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझा, तो जिलेट का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इतनी बड़ी कंपनी, यूएस की नंबर 1 कंपनी, और उसके बाद इंडिया में आके फेल हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूंगा। नाउ I would like to take a pause here and would like to tell you about the deadly mistakes which the people generally commit while in a business or in a relationship. Why I am taking this particular topic? Because since you are going to become a management graduate and you will be working for some company, some of you must be already working in the organization, there are some kind of deadly mistakes which in our career or in our life we commit knowingly or unknowingly.
So how to overcome and how to avoid those mistakes in life so that the people will consider you as one of the right person who is going on the right track and you can become a successful business leader for tomorrow. So the first deadly mistake which you do is it is called as the anchoring trap. एंकरिंग ट्रैप क्या होता है? बेसिकली हम में से कई लोग होते हैं जो दिमाग में ये इंप्रेशन डाल के बैठ जाते हैं कि बंदा हिंदी में बात कर रहा है इसका मतलब इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये बंदा ऐसे बात कर रहा है इसका मतलब इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये बंदा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है इसका मतलब इसको जो भी नॉलेज है बहुत लिमिटेड है। तो आपका एक परसेप्शन बन जाता है, आप एक जजमेंटल हो जाते हैं, आपने एक एंकर अपने दिमाग में लगा लिया। कहते हैं अगर हाथ में या बॉडी में अगर आपके टैटू हो तो उस टैटू को मिटाना आसान है, लेकिन अगर दिमाग में अगर टैटू लग जाए तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो आपने साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में एक ऐसा इंप्रेशन बना लिया है, उसको बोलते हैं एंकरिंग ट्रैप। तो कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल होता है अगर कस्टमर ने अपने कंपनीज के बारे में कोई निगेटिव इंफॉर्मेशन को लेकर अगर कोई एंकरिंग ट्रैप बना लिया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और उसको उस एंकर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मैगी। You know the incidents of Maggie in the year 2016. One of the NGO had identified high content of monosodium glutamate, which was having a lead content in it, and this was been identified and detected after Center for Science and Environment had conducted the separate independent study. During this study, it was found that the particular limit of lead, the monosodium glutamate, which is also called as a taste maker, the Chinese taste maker, it is also carcinogenic in nature. If you take that particular monosodium glutamate continuously over a period of time, it may cause 213 types of cancer in the body. So when it was been found in the tastemaker, suddenly it was banned by some states. Followed by that particular rally, 19 states had banned this particular Maggie. So the customers have made an anchor in their mind that Maggie is very, very harmful to their health. What happened later on was Maggie had dumped all the productions, all the particular products which were already manufactured and in the shelves, in the stores, in the warehouses, in the market, they had collected the entire Maggie product. Even a single unit of the Maggie was procured and then they had given it to Ambuja Cement Company. Why they had given the Maggie product to Ambuja Cement Company? Just to tell the customers that, see friends, we are very much concerned about your health. We have decomposed, we have burnt all the particular Maggie so that it will not be harmful to your health, and the inquiries are going on. After the inquiries will be over, we will once again come up fresh very strongly, and that Maggie had done. What they did was, after the inquiry was over, the Supreme Court had given the directives to Maggie. The Maggie had conducted a separate study in foreign markets and in the foreign laboratories, and it was found that the test method which was being adopted by the Indian laboratories was not akin to the test method adopted by the internationally standard companies or the internationally standard laboratories. Then the results were there, the comparison was made, and then the Supreme Court has given a directive to this particular Maggie. Based on the directive, the ban was lifted, and subsequently Maggie was launched. Now, friends, during this particular phase, when Maggie was going through a tough time, Patanjali's Atta Noodle Maggie had also made an entry in the market. There was Yippee Noodles brand from ITC that has also entered into the market. Then Top Ramen was already existing. All these brands have tried to get the maximum market share by taking advantage of this particular situation. But what happened? After this particular inquiry was over, Maggie had agreed to reduce the content of monosodium glutamate, and they had again come up with the particular product that was the same old Maggie with the same taste. What they did was they had launched an advertisement campaign. In the advertisement campaign, they had requested all the viewers, all the audience, all the consumers of Maggie to share their story of eating Maggie, how they started eating Maggie. Some of the interesting stories were shared during this advertisement commercial, during the commercial breaks, and in this way they have started developing a bond.
By developing a bond with the customers, the Maggie has again resurrected their brand, and in just about a span of 4 months, Maggie has become the number one brand in India. And Nestle has again acquired more than 70% of the market share of this particular Maggie brand. Now, friends, Maggie is really a fantastic brand. If you look at the brand value, the overall market share of the entire Nestle, if you look at it, almost 70% of the 70% of the market share which is captured by this Maggie brand is contributing towards more than 15% of the profit of the company. So Maggie is a really powerful brand. Now, Maggie was one case. Now, where the marketing was involved? Marketing was involved in understanding the consumer's needs, so sorting out their grievances, coming up with a product which was free from all such kind of adulteration and mixing, and then again recreating the positioning of the brand. So all these efforts have been taken in a marketing strategy. These efforts cannot be taken if you are just focusing on the sales part. There was a time when there were very less number of competitors. That must be the time of your father or my father's age, wherein the people were not having many of the choices. They were being left with very less options. So the kirana store wala, the grocery wala, he used to say that if you want you can buy, otherwise you can go. Today even dalda is coming up with fortified vitamin A, D, E and K. Earlier, dalda was being sold just as a simple plain hydrogenated oil. Why they have added these kind of nutrients and the minerals into it? Because they have added these kind of vitamins because they know that by consuming the hydrogenated oil, just like dalda, it is going to decalcify your bones. And decalcification of bones means reducing the bone density. To overcome this problem, Dalda, Sapola, and all other brands which are manufacturing hydrogenated and the other particular vegetable oil, they had started doing fortification of the oil with vitamin A, D, E, and K so that there won't be any loss of memory, so that there won't be any loss of eyesight, there won't be any loss of calcium from the bones. So marketing is a continuous effort. You cannot say that you have launched a product, that's it. Tomorrow you will not be looking at the product again. It's a continuous process. Look at the brands. Earlier there was a car like Padmini, you had Ambassador, for which the top speed was not more than 80 kilometers per hour. Today you have cars for which the top speed is 446 kilometers per hour. You have Maserati, you have fantastic Ferrari. The entire tank gets emptied in just about 6.5 minutes. So you can imagine where the particular technology is going. Earlier, nobody has predicted that. In my time, when I was in college, I had never imagined that there would be a time wherein I can do video calling. Today, video calling is just a normal routine of life. People are attending video conferences, video meetings, and other things just by using the technology. Earlier, it was not possible. Earlier, it was not possible to meet the doctors online. Today, you are taking the online consultation from the doctors only. So, marketing is an effort to first of all create something, then deliver something, and then increase the profit of the organization by adding value to the lives of the customers. If you are failing to add value, it means that your product, whatever you are selling, whatever you are having, that will bound to just get finished because of the competition. There are a number of examples. Earlier also I gave you Sony Walkman series, then Kodak film camera, then you have Xerox. There are n number of examples which got finished over a period of time. They were totally dislodged from the market. For example, Whirlpool refrigerator. There was a time when Whirlpool refrigerator was considered as one of the best in terms of cooling and other things. Godrej refrigerators, again they have made a comeback in the market. Onida TV sets. There was a time when Onida color TV set was number one. But today, every person who is able to afford the LED TV or the ultra high definition OLED TV is basically demanding for the high end TVs like Sony Bravia, Samsung, LG, etc. etc. But no one is saying that I would love to buy Onida. Where is Akai? Where is Sansui? All these brands have just gone. They have just vanished from the market because they had not focused consistently on adding value to the product. By way of that,
they would have survived in the market. But today it is very painful to say that almost 70% of the company which start in the first year under Startup India campaign cease to perform their business, they close their business in the third year. That is a story, and that is in the case study which has already been discussed in Harvard, that only 10 to 15% of the companies in the world they survive in the third to fourth year. Rest all the companies get disappear. It means that initially they started off well by understanding that this is the need, this is the want, but they had not improved, they have not changed, they have not customized, and because they have not done any customization, that is why they got failed in the market. So if you really want to be in the business, remember friends, don't believe in selling, believe in the marketing. Every time you have to improve your skills so that you can meet the changing demands of the industry. IT company, for example, earlier they were asking for the C++, .NET, Java. Today they are not demanding for C++, .NET and Java. They are asking for Azure, they are asking for Amazon Web Services, they are asking for something else. So tomorrow these technologies, these IT languages may not be working. So you need to constantly upgrade yourself. If you focus only on Java part, and when you go to the industry, you say that I am a fantastic trainer for Java. I am a fantastic professional for Java. But organization doesn't need Java because it will not add any value to the business. So why you are learning that particular language? You are learning that language because you can add some value to the organization. So do something every day in the life which will contribute to your career tomorrow. Okay, so Philip Kotler, I just told you that day that Philip Kotler is considered as the father of modern marketing management. He is considered as father of modern marketing because he had given lot of concepts and he had actually clarified the thin line difference between the selling approach and the marketing approach. Whatever books we study today has got some kind of reflection from the sayings, from the particular concepts, and from the talks of the Philip Kotler. He is still alive and he is a faculty at Kellogg's School of Business. You can watch his profile online also, and you can follow him on Twitter as well. So Philip Kotler has said that marketing is all about satisfying the needs and wants through an exchange process. Now here comes a new thing. Exchange process क्या होता है? Now I'll take an example. Now in my screen I can see two faces right now. On my left hand side I can see Priyanka Ramteke, and on my right hand side I can see Harish. Now, Priyanka, suppose you don't have any currency and you both, Harish and Priyanka, you both are in such a state or in such a country wherein the currencies doesn't exist at all. But you both have something which is of value to each other. You both are traders. Suppose Priyanka is having a mask. Priyanka is having a mask while at the same time Harish is having this sanitizer. Priyanka doesn't has this particular sanitizer and Harish doesn't have this particular mask. So what Priyanka can do is Priyanka can exchange this particular mask with the sanitizer with the Harish. So in this way, there is no involvement of currency, but at least you have exchanged the product from each other for value, which was of value to each other. So this is called as a barter system. It existed in the country at the time when no currency was invented. When the currency was invented, that time people had started trading with the currency. मोहरें होती थी पहले, आपको पता है, सोने की, चांदी की, कांसे की, ब्रॉन्ज की, ये सब मोहरों से ट्रेडिंग होने लग गई. ये कब हुआ चालू? ये मुगलों के टाइम पे हुआ. और मुगलों के टाइम से भी पहले जो करेंसी चलती थी उसमें कौड़ियां होती थी, जो आपको समुद्र में जब आप जाते हैं, जब आप बीच साइड में जाते हैं, नदी के साइड में जाते हैं, आपको कौड़ियां मिलती हैं, शेल्स होते हैं, एम्प्टी शेल्स होते हैं. दोज यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ करेंसी. लेकिन एक टाइम था कि जब सिविलाइजेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जब लोगों को पता ही नहीं था, तो वो आपस में एक दूसरे से अगर कुछ एक्सचेंज करना है, गेहूं के बदले में आपने चावल एक्सचेंज कर लिया, चावल के बदले में आपने दूध एक्सचेंज कर लिया, इस तरीके का बार्टर सिस्टम इंडिया में भी चलता था. धीरे धीरे बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, फिर एक्सचेंज कंसेप्ट आ गया. एक्सचेंज कंसेप्ट के बाद फिर आपका सेलिंग कंसेप्ट आया, सॉरी प्रोडक्शन कंसेप्ट आया, जब कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन पे फोकस किया और जो भी प्रोड्यूस करते थे कस्टमर को बोलते थे ये ले लो. कस्टमर बोलता था कि मुझे नहीं चाहिए, तो कंपनी बोलती थी कि ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, मत लो, आगे चले जाओ, दूसरा कस्टमर आएगा वो ले लेगा. क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास में तो इतने सारे कस्टमर हैं, मैं एक कस्टमर के लिए क्यों रहूं.
फिर प्रोडक्शन कंसेप्ट धीरे 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 आउटडेटेड होने लग गया। क्यों? क्योंकि आज आपने अगर ये सैनिटाइजर बनाना चालू किया, आपको याद है स्टार्टिंग में मार्च के महीने में N95 मास्क के लिए कितनी भीड़ लगती थी? 250 रुपए का मास्क बिकता था और उसका प्राइस इतना ज्यादा था कि लोग कहते थे कि यार N95 मास्क लेना है, उसके बगैर हमको मार्केट में नहीं निकलना है। प्रियंका याद है आपको? हरीश हरीश भाई आपको भी याद है? अब धीरे धीरे क्या हुआ, आज यही मास्क आपको 12 रुपए और 14 रुपए का मिल रहा है। क्यों? उसके दो रीजन है। एक तो गवर्नमेंट ने इस पे एक लिमिट लगा दी कि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, अब आप इससे ज्यादा इसका प्राइस कर नहीं सकते। अब चाहे आप फाइजर कंपनी हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे आप एक छोटे नथुलाल एंड सन्स कंपनी हो, N95 मास्क अगर बना रहे हैं तो उसी प्राइस में आपको बेचना है जो प्राइस का आपको गवर्नमेंट ने उसमें लिमिट लगा दी है। तो यहां पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल आ जाता है। तो मार्केटिंग में आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, कस्टमर को भी देखना पड़ता है प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी देख के चलना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार कस्टमर को तो वैल्यू देनी है, अभी कस्टमर को, मेरा कस्टमर जो है वो सिगरेट पीता है, स्टूडेंट है, क्लास में है, प्लीज डोंट माइंड, हाँ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और अगर रात में अगर उसको एक स्मोक कर लिया तो वो 3 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ लेगा और कल उसका एग्जाम में पास हो जाएगा। तो मैं एक कंपनी हूँ, आईटीसी ब्रांड है मेरा, विल्स का ब्रांड है, मैंने सोचा कि चलो उसके घर में रात में डिलीवर करें। तो क्या ये एथिकल होगा कि आप एक स्टूडेंट को स्मोक दे रहे हैं? नो। तो मार्केटिंग में एथिकल प्रैक्टिसेस को भी देखना होता है, मार्केटिंग में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पब्स एंड बार्स हैं, अभी महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग की एज लिमिट क्या है? हार्ड ड्रिंक्स के लिए 25 साल, और जो आपका बियर वगैरह उसके लिए 21 साल। अगर कोई लड़का, अगर कॉलेज वाला 18-19 साल का अगर चला जाता है कहीं पब में, तो उसको टेक्निकली लीगली आप उसको सर्व नहीं कर सकते। और अगर कोई ब्रांड है तो उसको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर ऐसा कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको सिंपली बोल दो कि सॉरी वी वोंट सर्व यू। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मार्केटिंग में कंपनी, कस्टमर, इन्वायरमेंट सबको साथ में लेना पड़ता है। सेल्स में आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हो? सामने वाले कस्टमर के ऊपर। और सेल्स में इसीलिए ग्रे मार्केटिंग भी होती है। ग्रे मार्केट का मतलब, मुंबई में चले जाओ जूना बाजार में, आपको नए से नए ब्रांड के फोन मिल जाएंगे जो शायद कहीं किसी पिक पॉकेट ने किसी ट्रेन से गायब किए हैं या कहीं से गायब हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है ये सब एग्जिस्ट करती हैं। आपको सेल्स पे फोकस नहीं करना है, आपको मार्केटिंग पे फोकस करना है, जिसमें कि आप सामने वाले के लिए वैल्यू एडिशन तो कर रहे हो बट एट द सेम टाइम लीगली एंड एथिकली। वैल्यू एडिशन लीगली एंड एथिकली इफ यू डू, देन प्रोबेबली यू विल बी सक्सेसफुल। आज इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने क्या किया, एंकरिंग ट्रैप लेके आ गए, इंडिया के बारे में बहुत कुछ सोचा था और इंडिया में आने के बाद फेल हो गए। फॉर एग्जांपल केएफसी का ब्रांड आपको पता है, केंटुकी फ्राइड चिकन। केंटुकी फ्राइड चिकन ये कंपनी जब इंडिया में आई तो इसने क्या किया, इसने अपने मेनू में ऑप्शन जो रखा था वो था पॉर्क एंड बीफ। पॉर्क एंड बीफ, पॉर्क क्या होता है? व्हाट इज पॉर्क? हरीश भाई, पॉर्क मीट क्या होता है? एनीवन फ्रॉम द क्लास हु कैन टेल मी व्हाट इज पॉर्क मीट? Anyone from the class, please unmute yourself and tell me what is pork and what is beef. सर सुअर का मीट। Yes, very good. Exactly. And beef? और बफेलो। Buffalo and ये जो आपके जो रहते हैं गाय भैंस वगैरह, जो कुछ भी ऑक्स वगैरह, उनका बुल का। ओके, वेरी गुड। तो जब ये केएफसी ब्रांड जब इंडिया में आया तो इसने क्या किया, इसने पॉर्क का और बीफ का बर्गर और बाकी सारे उसके फास्ट फूड जो भी प्रोडक्ट्स थे वो उसमें लॉन्च किए। उसको लगा कि ये ऑलरेडी यहाँ सक्सेसफुल है वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन उसने एक गलत एस्टिमेशन कर दिया, वो था इंडियन कंज्यूमर का गलत एस्टिमेशन। उसको ये लगता था कि ये इस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे चल जाएंगे, लेकिन नहीं चला, फेल हो गया। 1997, 98, 99 के बीच में इसका बिजनेस इतना डाउन हो गया, 98, 99 में एग्जिट हो गया, इंडिया से बाहर हो गया पूरा। क्यों? क्योंकि उसको मैकडोनल्ड्स ने लात मार के बाहर निकाल दिया, कंपटीशन में वो कहीं टिका ही नहीं केएफसी। बाद में केएफसी ने क्या किया, केएफसी ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने देखा मैकडोनल्ड किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो वैल्यू क्रिएशन में उसने क्या किया, मैकडोनल्ड हैड क्रिएटेड अ वैल्यू बाय एडिंग द वेज ऑप्शन इन द मेनू। प्रियंका समझ में आ रही है? मैकडी का दुनिया में कहीं पर भी कोई भी स्टोर में जाओगी आपको मैक आलू टिक्की नहीं मिलेगा। केवल इंडिया की मार्केट के लिए मैकडोनल्ड ने मैक आलू टिक्की बर्गर और ये जो था ये लॉन्च कर दिया। अब ये लॉन्च कर दिया, काफी हिट हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसको पता था कि इंडिया में लोग दो तरीके के हैं, या तो वेज या नॉन वेज, या मंडे या ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे वाले वेजिटेरियन और बाकी दिन में नॉन वेजिटेरियन। तो मैकडी ने क्या किया, मैकडी ने एक तो वेज आलू टिक्की लॉन्च किया, और मैकडी वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी पॉर्क और बीफ सेल करता है, लेकिन उसने इंडिया में जब अपने प्रोडक्ट को लेके आया
तो इंडिया में उसने पॉर्क और बीफ की जगह पे रखा चिकन बर्गर। चिकन बर्गर इसलिए रखा क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं दे प्रिफर द चिकन, right? So why I'm giving you this example, because it has got linkage with the subject which I'm telling you, which I'm teaching you right now. तो इस चीज की वजह से मैकडोनल्ड काफी सक्सेसफुल होगा कि वेज के लोगों के लिए आलू टिक्की और नॉन वेज खाने वालों के लिए चिकन। तो अब उनके पास में अच्छा ऑप्शन था। दूसरा, मैकडी ने क्या चेंज किया, मैकडी ने देखा कि वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में टेक अवे ऑप्शन है। अगर आप कभी जाते हो, कभी यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, कहीं पर भी जाओगे तो आपको यूरोपियन नेशंस में हर जगह पे मिलेगा कि वहां पर टेक अवे ऑप्शन है। मैकडी में गए, आपने अपना कॉफी लिया, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, आपको जो कुछ भी मिला बाहर उठा के लेके आए, कहीं पार्क में बैठे आराम से खाया, और वो जो डिस्पोजेबल है वो डस्टबिन में डंप किया और निकल गए। लेकिन इंडिया में उसको पता था कि अगर प्रियंका खाने जाएंगी अगर बर्गर फैमिली के साथ में या अकेले, तो प्रियंका को पसंद है कि वो वहां पे बैठ के खाएं। इस वजह से मैकडी ने बुफे सिस्टम किया, जो वर्ल्ड में दूसरे किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलता, जहां पर लोग ऑर्डर देने के बाद उस जगह पे बैठते हैं, बैठने के बाद आराम से उसी जगह पे खाते हैं, और बढ़िया सी म्यूजिक और बढ़िया से एम्बियंस। ये मैकडी ने चेंजेस किए और ये मार्केटिंग का पार्ट है। अगर उनको केवल बर्गर सेल करने पे फोकस करना होता तो वो क्या करते थे, वो कहते थे कि यार जिसको आना आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने एंकरिंग ट्रैप नहीं रखा। एंकरिंग ट्रैप अगर उन्होंने रख लिया होता तो वो बिजनेस में और रिलेशनशिप, जो कस्टमर रिलेशनशिप है, उसमें बुरी तरीके से फेल हो जाते। इसलिए उन्होंने अपने एंकरिंग ट्रैप को नहीं रखा। वाइल एट द सेम टाइम the KFC brand was having the anchoring trap, and due to which the KFC got failed, while the other counterpart that became successful in the market. Again, KFC entered in the market with the same approach. They had started following the McDonald brand. They had come up with the chicken menu option. Instead of pork and beef, they had come up with the chicken menu. समझ रहे हैं हरीश भाई? तो चिकन मेन्यू लेके आने के बाद चिकन नगेट्स और ये सारी चीजें, चिकन बर्गर, ये सब चालू हो गया। अब लोगों को थोड़ा सा ठीक लगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, मार्केट आपको एक बार चांस देती है, और एक बार के बाद अगर आप नीचे गिर गए तो बहुत मुश्किल होता है। नोकिया का ही एग्जांपल ले लो। नोकिया एक टाइम पे मार्केट में कितना फेमस था, हर किसी के दिमाग में नोकिया 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 नोकिया। जैसे हम वो माला जपते हैं, वैसे नोकिया का नाम था। हर कॉलेज जाने वाले के पास उसका एक सपना था कि नोकिया का एन सीरीज का फोन लेना है। N91, N73, N95, ये मेरे टाइम पे जब बंद हुआ तो मेरे लाइफ के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि हम लोगों ने नोकिया के साथ जीने की आदत डाली थी, और नोकिया का सडन जाना और सैमसंग को सडन अडॉप्ट करना ये बहुत मुश्किल था। सैमसंग ने उसी टाइम पे कॉर्बी डिजिटल सीरीज लॉन्च किया था, जिसको उन्होंने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि कॉलेज में जाने वाले लोगों को गेम भी खेलना है, उनको वीडियोस भी देखने हैं, उनको म्यूजिक भी सुनना है। तो क्यों ना एक ऐसा फोन लॉन्च किया जाए जिसमें ये सारे फीचर्स का कॉम्बिनेशन हो। और उन्होंने कॉर्बी डिजिटल फोन लॉन्च कर दिया। और ये कॉर्बी डिजिटल की स्टोरी है, जहां से सैमसंग ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज सैमसंग जो गैलेक्सी ब्रांड के पीछे जो इतना सब कुछ एफर्ट्स लगा रहा है, कोरियन ब्रांड है, उसकी वजह यह है कि उसने जो कस्टमर बेस तैयार किया था वो कस्टमर के दिमाग में परसेप्शन बन गया। लेकिन अब बात आती है एप्पल और सैमसंग के बीच की। अगर वर्ल्ड में हाईली इनोवेटिंग ब्रांड्स में अगर बात की जाए तो एप्पल नंबर 1 पे होगा। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को फॉलो नहीं करती, बल्कि लोग उसको फॉलो करते हैं, कंपनीज उसको फॉलो करती हैं। और यही एक वजह है कि हर साल एप्पल अपना एक ही फोन है उनका, आईफोन। एप्पल के पास गैलेक्सी ये हेमका टिमका टिमकम कुछ नहीं है। एप्पल के पास एक ही फोन है जिसको हर साल वो अपग्रेड करते हैं। एवरी ईयर द एप्पल कीप्स ऑन अपग्रेडिंग द सेम phone, same version of the phone to the next version that was there existing earlier in the market. And that is the USP of Apple brand. They are not just relying on making n number of brands, n number of variants under the same umbrella. Rather, they are focusing only on the same variant, which they can assure that this is going to give them the business. And every year they are adding new features. This is helping the company to add value. Add value, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसमें। जितना वैल्यू एडिशन, अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें देखिए, पीपीटी को रीड करना कम और एग्जांपल देना ज्यादा रहता है। तो एक एग्जांपल है समोसे वाले का। अगर वो केवल आलू उबाल के, नमक डाल के और चाट मसाला डाल के लोगों को दे दे, तो क्या वो उसका समोसे का जो आलू का 10 रुपए कमा पाएगा एक प्लेट का? नहीं कर पाएगा। उसने क्या किया? वैल्यू एडिशन किया। उसी आलू को उबाला, उसमें मसाला मिक्स किया, कांदा और लहसुन और ये सारी चीजें मिलाई, और उसमें मैदा लगा कि उसने उसने उसको समोसा बना दिया। और समोसा बनाने के बाद उसने वही कस्टमर को बेचा जिनको भूख लगी है, और उससे उसने 10 रुपए 12 रुपए चार्ज किए। उसने उसमें चटनी भी डाल दी। ये हो गया वैल्यू एडिशन। समझ में आया? तो वैल्यू एडिशन आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप केवल प्लेन प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर करोगे, कस्टमर विल नेवर वांट अ प्लेन प्रोडक्ट, कस्टमर वांट समथिंग एल्स। कस्टमर को चाहिए कि इसके साथ कुछ और तो हो। और इसीलिए आपने देखा होगा, आप कुछ भी अगर आज इवन ऐप में भी एक्सेस करते हैं तो आपको वो ज्वाइनिंग बोनस देते हैं, या आपको वो रिफरल डिस्काउंट का ऑप्शन देते हैं, या आपको कुछ और चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देंगे, आपको बोलेंगे पेमेंट करना है तो आप आपका बिजली का बिल भर सकते हो, इंश्योरेंस का भर सकते हो, गोल्ड खरीदना है खरीद सकते हो। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स। सो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है और सेलिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग एक पेरेंट है और सेलिंग उसका चाइल्ड है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बताया आज पहला एंकरिंग ट्रैप, और एंकरिंग ट्रैप के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं, और मैंने उसके थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की कि आपका पर्टिकुलर जो एंकरिंग ट्रैप है, उस एंकरिंग ट्रैप को आपको कैसे हटाना है लाइफ से। आप जो परसेप्शन बना रहे हो, वो परसेप्शन बनाने के लिए आपका एक झलक किसी के लिए काफी है देखना, बट एक बार वो बन जाता है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड जो आपका ट्रैप है लाइफ का, जो बिजनेस में और रिलेशनशिप में आप करते हो, वो है आपका स्टेटस को ट्रैप। स्टेटस को, STATUSQUO, स्टेटस को। स्टेटस को मतलब ये कि आप सोचते हो कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में, BSNL के ऑफिस में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, आपको वही पुराना पंखा ट्यों 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 करके घूमता हुआ दिखेगा। पुराना बड़ा सा पंखा, पुराना कूलर, पुराने काउंटर, पुराना फर्नीचर, और उसके पीछे लटका हुआ पुराना सा तिरपाल। आप वही अगर एक नया मल्टीनेशनल बैंक में चले जाओ, आप या रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ड्यूश बैंक, HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन में चले जाओ, IDBI में चले जाओ, HDFC में चले जाओ, एक्सिस में चले जाओ, आपको एक नया एम्बियंस मिलता है। आपको फील होता है कि यार मैं कहीं नई जगह पे आ गया हूँ, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। आप मारुति में ही ले लो। मारुति में अगर आप जाते हो तो आज की तारीख में, जो जहां पहले मारुति में पानी भी नहीं पिलाते थे, वहां आज आपको स्नैक्स रखे जाते हैं, जूस पिलाया जाता है। अगर आप नेक्सा के शोरूम में जाओगे तो आपको आराम से बैठा के कॉफी भी पिलाएंगे। उनका पूरा ऑल ओवर इंडिया में टाई अप हो चुका है आज की तारीख में कैफे कॉफी डे के साथ में। क्यों उन्होंने टाई अप किया कैफे कॉफी डे? वो नथुलाल को भी बैठा के बोल सकते थे कि नथुलाल बेटा मैं तुझे 16,000 रुपए दूंगा, तू बढ़िया कॉफी बना और सबको पिला। उन्होंने क्यों कॉफी डे के साथ में टाई अप किया? बिकॉज दे नो दैट अगर मारुति को ब्रांड बनाना है तो ब्रांड के साथ ही कनेक्ट करना है, और ब्रांड के साथ कनेक्ट करेंगे तो पोजीशनिंग होगी, अदरवाइज पोजीशनिंग होने वाली नहीं। आपको ये चीज पता होगी कि जितने भी एक्सपेंसिव और लग्जरी ब्रांड्स हैं वो कभी सस्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मर्सिडीज बेंच का जो साइड मिरर है वो 1.25 लाख रुपए का आता है। 1.25 लाख रुपए में हमारी बाइक आ जाती है, लेकिन लेने वाले लोग मर्सिडीज बेंच लेते हैं, राइट? रोल्स रॉयस कंपनी का वो जो आगे लोगो निकल के आता है, वो 22 लाख रुपए का केवल लोगो है जो बाहर निकल के आता है। प्लैटिनम का लोगो 22 लाख रुपए का। 22 लाख में लोग अपनी 2-3 गाड़ियां खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मार्केटिंग है, हर जगह है। आपके कस्टमर के हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी है। आपने अगर इधर फोकस किया आंखों के सामने, तो आंखों के सामने जो दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करिए। ऊपर नीचे करेंगे तो ध्यान भटक जाएगा। इसी तरीके से KFC ने गलती की कि उसने ऊपर नीचे किया, इस वजह से उसकी गलती हो गई। बाद में वही मार्केट में आ गया, अभी वो कॉम्पीट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। स्टेटस को में आप कई बार कोशिश करते हो कि मेंटेन करते रहो। फ्यूजी फिल्म का एग्जांपल लूंगा। कोडैक कंपनी बहुत फेमस थी मेरे टाइम पे, जब मैं पैदा हुआ था तो कोडैक कंपनी नंबर 1 थी फिल्म बेस्ड कैमरा में। इट वाज द सक्सेसफुल कंपनी इन द वर्ल्ड, जापानीज कंपनी। वो अपनी फिल्म बेस्ड रोल वाला कैमरा बनाती थी, फोटो खींचो और उसको डेवलप करवा लो, और उसके बाद जो भी फोटोग्राफ थी उसको देखने के लिए लोग परेशान होते थे कि फोटो कैसे खींची। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केट का ट्रेंड आया, जिसमें ये HP, कैनन और निकॉन, इन लोगों ने, कैनन एंड निकॉन सबसे पहले आए, इन्होंने अपना डिजिटल कैमरा मार्केट में लॉन्च किया। फ्यूजी फिल्म कंपनी के एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को बोला कि क्यों ना हम भी डिजिटल कैमरा लॉन्च किए रहे, तो उसके कंपनी ने उसको फायर कर दिया, ये कह के कि हमारा जो ब्रांड है इतना पावरफुल है कि अगले 5 साल भी हमको कोई मार्केट से हिला नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, 3 साल के अंदर फ्यूजी फिल्म को बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करना पड़ा, दिवालिया हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा जैसा है उसको वैसे ही मेंटेन रखो। उन्होंने मार्केटिंग पे फोकस किया, वैल्यू एडिशन पे फोकस किया, लेकिन वैल्यू एडिशन कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। आज अगर आप ये शर्ट पहने हो चेक वाली, हो सकता है कि कल किसी और ओकेजन में जाओ आपको चेक वाली शर्ट पसंद ना आए। तो वैल्यू एडिशन कंसिस्टेंटली होना चाहिए। एक ही ब्रांड को 10 एंगल पे काम करना चाहिए कि आज एक ही कस्टमर की अलग अलग ओकेजन में अलग अलग डिमांड होती है, तो उसको अलग अलग डिमांड को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, राइट?
तो स्टेटस को आपको लाइफ में हमेशा देखना है, एक हद तक ही स्टेटस को बनाना है, उसके बाद उसको चेंज करना है। ब्रेक करिए वॉल को, जो ये वॉल बना देते हैं इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये अभी टाइम हो गया है 1:10। अब मैं ये सेशन आप लोगों के लिए ओपन करता हूं। देखिए, एक मैं आपको लाइन सुनाना चाहता हूं, बहुत ही फेमस लाइन है, हो सकता है कि शायद आपको पसंद आए। देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, ध्यान दीजिएगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो वक्त के साथ में लड़ना पड़ेगा। ये मत सोचो कि यार सुबह उठना नहीं है, क्लास करना नहीं है, चलता रहेगा, एमबीए की डिग्री तो आ जाएगी, ये सब हो जाएगा। तो ये जो स्टेटस को है, जो एंकरिंग बना के रखी है, इसको आपको निकालना बहुत जरूरी है, राइट। आज का लेक्चर यही खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से अपना फीडबैक लेना चाहता हूं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेशन अब आपके लिए, प्लीज अनम्यूट करके आप कोई भी बात कर सकते हैं। वेट मत करिए अपने इंतजार का, इंतजार का अगर वेट करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, राइट। जी बोलिए, विनोद जी, हरीश भाई, सेशन कैसा था आज का? Sir, it was very nice session, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। and you gave the live examples, which in our daily lives, which is going in our daily lives, so we have understood it very properly. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। For हरीश भाई example, जी, cricket, Maggie, like that type, McD, KFC, like that. So we have understood it perfectly. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सो मच। आप लोगों का और भी कोई फीडबैक है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपका? Sir. जी, No doubt, sir. थँक यू सो मच, थँक यू। आता सेशन संपलंय, उद्या परत माझं सेशन आहे 12 वाजेपर्यंत. तर 12 वाजता मी सेशन घेणार आहे, ती मी तुम्हाला लिंक पण शेअर करणार आहे. त्याच्या आधी तुम्ही तो लिंक मी तुम्हाला पाठवले आहेत व्हॉट्सअपवर, तुम्ही एकदा लिंकवर जाऊन ते बघा, जे काही कन्सेप्ट आहेत जे मी तुम्हाला ते आता डिस्कस करणार आहे पुढच्या लेक्चर्समध्ये, ते कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये दिले आहेत. ते स्टोरी, as a story you just read the stories and then I am going to discuss it. Further, I request you all to kindly share my feedback on the WhatsApp group. It will help to encourage other students also. That's all. मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है और आपका अभिनंदन है। थैंक यू, Thank you, Same to sir. you, Have a sir. great day. Have a great day, sir. Bye. Thank you, बाय sir. बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय। Harish, how are you? Vinod Pawar, how are you?